I was quite pleasantly surprised when I arrived in Islamabad and we had some trials. I was quite surprised that the quality of the players was very good. However, having said that, from what I can gather from the information gathered from the players, the majority of them are self-taught, which I think is a tremendous achievement on their behalf. But what concerns me is the fact that these guys are talented, but there's no progression for them. So they need to move on to better their talent, you know, with the club. Yeah. And I don't see in Pakistan at the moment a progression for these guys. So that is what's needed. And equally, for them players to be self-taught is a great achievement, as I mentioned before, but they need some coaching. The guys that we have in the team, some of them guys have never been coached before. And they're playing in the World Cup, you know, in a few weeks' time. Yeah. So that is, you know, that's a wonderful, wonderful achievement for them guys. But you know, if these guys have had some sort of development process, some coaching, qualified coaching, you know, these guys could play in Europe. They could, you know, they could play worldwide. But don't you think they need a proper infrastructure? Because yes, they are not having any sort of infrastructure yet. We spoke about this earlier, the guys and I did. There isn't any infrastructure here. In fact, I think we was coming through the city earlier, and I think one of the guys mentioned there is only one major stadium in the city, which is the National Stadium, which I was quite surprised about, really. And I'm not quite familiar what the professional process is here in Karachi or Pakistan. But for these guys to develop and progress, they need that next step, that next stage. Yeah. If they don't get that, they'll just fall by the wayside. Okay. You know, so there needs a big investment, infrastructure, the coaching, you know, the stadiums, all the facilities. But we must appreciate the efforts of Trunkwala Group. They have come forward and they actually introduced this leisure league in Pakistan. Before that, nobody had ever thought about it. Absolutely. You know, you have to thank the Trunkwala family leisure leagues, the World Group. Fantastic. You know that these guys are doing what they're doing. Because it's giving these lads, you know, an opportunity to go and play football, enjoy themselves in their spare time. You know, and some of these guys obviously being selected for the World Cup, so they turn out on a Saturday, Sunday or midweek, and then they end up in the World Cup with a few weeks later. You know, so how is that? That's fantastic, isn't it? Fantastic. Really. But you know, for the guys who are putting the money in, the Trunkwala family and leisure leagues and the World Group, it's amazing, fantastic. They're doing a great job. गौर, आप पाकिस्तान के लिए भी फुटबॉल खेले, कैसे देखते हैं 6-a-side, 7-a-side में खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स को जो है एनहांस करने का मौका मिलता है? आप इस लेजर लीग के पहले एडिशन से वाबस्ता हैं या अभी आपने इसको ज्वाइन किया? नहीं, मैंने पहले एडिशन में भी था और क्योंकि मेरी कुछ फैमिली टाइज थी तो मैं पिछले प्रीवियस वर्ल्ड कप में नहीं जा सका, तो तकरीबन जब से लेजर लीग वो है उनके साथ ही मेरी अटैचमेंट है और इस टाइम मैं लेजर लीग के साथ असिस्टेंट कोच के बडीज के साथ टीम के लिए हूँ। टैलेंट कैसा देखा आपने? नजर आता है क्योंकि लोग कहते हैं लेजर लीग जो है वो तो एमेचर टाइप के फुटबॉलर्स हैं कि वो सैटरडे संडे खेलते हैं। जो फुटबॉलर जो रेगुलर होते हैं, आप तो खुद खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो तो पूरा मतलब खेलते रहते हैं। लेकिन लेजर लीग में उम्र की भी कोई कैद नहीं है, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन, हर कोई आके खेल सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मिर्ज़ा भाई, जहाँ तक टैलेंट की बात है, आप यकीन को आई वाज रियली सरप्राइज कि जो मैंने जो हाई फाई स्कूल्स हैं उनके बच्चे जो देखें, जो एजुकेशन ज़ाहिर बात है उनकी अवेयरनेस है, तो वो ज़ाहिर बात है वो इंटरनेशनल फुटबॉल से काफ़ी वाकिफ़ है और उनके जो स्किल्स और वो है, आई वाज रियली सरप्राइज। वी हैव टैलेंट, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, बट हाउ टू फॉलो द टैलेंट। टैलेंट हंट कर लिया, इट्स ओके। मिर्जा इकबाल भाई बड़ा क्लास का प्लेयर है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मिर्जा इकबाल भाई? उसकी डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए क्या वो करना है, क्या कोई वी हैव एज ए प्रोफेशनल एकेडमी कि कैसे वो आगे कैसे वो ग्रूम करेगा? तो केविन ने अभी जिक्र तो किया ना कि इनकी कोचिंग, प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है। आप समझते हैं कि प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है, और अगर है तो कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए अगर प्रॉपर कोचिंग चाहिए तो? मिर्जा भाई ये बिल्कुल कंटिन्यू प्रोसेस है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने में। यू विल नेवर डेवलप अ स्किल इन अ वीक और मंथ्स। यू नीड प्रोसेस, बिल्कुल एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इसका सिंपल से वो ये है कि अगर आपने एक टूर्नामेंट कर लिया है, जाकर खेल गए, बड़ा अच्छा हाई फाई टूर्नामेंट अंडर 16-19 खेल लिया, वापस आ गए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? ये स्टेप नहीं है कि
आप घर आके बस हाँ, बस चले हमारा You have to सबसे continue. यू हैव टू कंटिन्यू कंटिन्यूटी कैसे आएगी थिंक अबाउट दैट कि कैसे इसके लिए कोई प्रॉपर एकेडमीज हो हम एकेडमीज से अर्न कर रहे हैं वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन एकेडमीज Okay. Kevin, you were actually trying to say something, please. Yeah, I was going to say that, as I mentioned earlier, these boys and girls, for that matter, they are self-taught. Yeah. What happens is they can develop the ball skills, you know, the turning, dribbling, etc. But what they won't develop is the tactical knowledge, you know, how to play in a certain system and in a certain shape. And they're only going to do that if they can get into an academy or of such like, where they're going to get qualified coaching and guys that understand the game. And I've been in the game for like 22 years. So that is a concern. To move these players forward, they need to have the ball skills, but they need to develop the tactical knowledge of the game. That is a priority. That is the main thing. Yeah, absolutely. हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है केविन माइकल रीव्स हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ गौहर जमान मौजूद है प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राब्ता करेंगे डेप्टी सीईओ ऑपरेशन जो लेजर लीग के हैं ज़ेब खान से जो इंग्लैंड में हैं उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग और आज हम बात कर रहे हैं लेजर फुटबॉल लीग के हवाले से क्योंकि पाकिस्तान की एक टीम जो कि लेजर लीग के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए जा रही है यूनान और पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के हवाले से जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले केविन माइकल रीव यहाँ आए हुए हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके साथ गौहर जमान भी है तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं केविन हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ these youngsters are they actually having some sort of a skill or they having some sort of talent so that they can go ahead or you are seeing they are just amateur footballers? Well, at the moment they are amateur footballers, and until, as we mentioned earlier, until they can get some sort of coaching to move forward, they will unfortunately stay as an amateur. You know, if they don't get the development, then there's no progression. But what I will say to the guys, it was a very strong selection process, you know, we had over the period of 10 or 12 days. And some of the guys, it was a very tough decision to make to choose the players that we did, and we actually picked 7 instead of the 5 to give the guys, you know, a fighting chance in Greece. But the guys who didn't make it, I know I've had a few messages from the players asking why they didn't make it. But you know, it's a very difficult process, as I mentioned. But you know, it's not the end of the world for these guys, you know, because fortunately the World Cup's every year, so it's not like you know the 11v11 World Cup, which is every 4 years, but this is every year. So what I've said to the guys is, if they work on what they're good at, and they work on what they're not so good at, right? You know, and they keep playing every week, whenever they get the opportunity to go and play and improve themselves. There's always the opportunity for next year, so it's, you know, they shouldn't be disappointed. Absolutely, absolutely. Okay. And what I'll say is, because they didn't get selected, don't be downbeat. Just support the team in Greece. Okay. हमारी गुफ्तगू तो जारी है लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर इंग्लैंड से ज्वाइन किया है लेजर फुटबॉल लीग पाकिस्तान के डेप्टी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑपरेशंस ज़ेब खान ने कि जो फुटबॉल के हवाले से एक अपनी हैसियत रखते हैं हम इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़ेब अल्लाह का करम ज़ेब सबसे पहले तो ये बताइए कि तैयारियां जारी है मेरे साथ केविन माइकल रीव्स मौजूद है कंफ्यूजन था केविन फिलिप रीव्स अलग है और ये केविन माइकल रीव्स है आप तो रोनाल्डिनो को लाने वाले उन लोगों में शामिल थे कि जो गए थे इंग्लैंड बातचीत की गौहर जमान वो क्लियर करने के कैसे सिलेक्शन हुई क्या थी वो उसके बारे में मैं बताएं वो इस तरह था कि जो पहले नेशनल चैंपियन जो टीम हुई उससे 5 लड़के कितने सिटीज के दरमियान चैंपियनशिप हुई है ये तकरीबन मोर देन 70 कंट्रीज के दरमियान पाकिस्तान की बात पाकिस्तान सो मोर देन 70 शहरों के दरमियान ओके उसमें से एक जो चैंपियन हुई लाहौर वो चैंपियन उसमें से 5 लड़के लिए गए जो लेजर लीग चैंपियन बना 5 लड़के हमने ओपन ट्रायल्स रखे पिछली दफा तो जो चैंपियन टीम थी वो खेलने गई सिर्फ वो खेलने गई थी इस दफा 5 जो नेशनल चैंपियन उससे लिए 5 ओपन ट्रायल से एनीबॉडी वो ट्रायल दे सकते हैं तो 10 हो गए कितने मेंबर स्क्वाड है आपका ये तक 15 प्लेयर्स का वो तो 5 बाकी कहां से आएंगे बाकी 5 जो है वो हमने लिए नेशनल टीम से जो पाकिस्तान नेशनल टीम से और बाहर के जो फॉरेन के जो लड़के थे 2 लड़के उसमें भी वो यूसुफ भट्ट और तो उसमें एज लिमिट कुछ नहीं रखी कुछ एज लिमिट नहीं है So how do you see? There's no age limit. Everyone can participate in that. Yeah, absolutely. You know, it's great. Even if you can't play football, go and enjoy it and have some fun and go and enjoy the football, you know. And
you never know what happens. And football's a very funny game, absolutely. So does it enhance the skill of the players, because it's a six-a-side football, the ground is very short, and how do you see the skills improvement of skills? I think it improves you as a person, as an individual, because when you play this game, it's very fast tempo game. And so you have to develop the skills pretty quickly. So therefore, you have to be physically fit and you have to be mentally fit, switched on. So you know, as an individual, it will improve you right the way through. Okay. मिर्ज़ा भाई आपके साथ उसमें वो ये कि 11 साइड में भी जब कोच कोई टेक्निक या कोई ड्रिबलिंग या कोई स्किल्स वो डेवलप करना चाहते हैं तो वो स्मॉल साइड गेम पे आते हैं 4 वर्सेस 4, 3 वर्सेस 3, 5 वर्सेस 5। इसी गेम से आपकी स्किल्स डेवलप होते हैं। 11 के लिए 11 साइड के लिए, ठीक है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। केविन माइकल रीव्स और उनके साथ गौहर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज मैं बात कर रहा हूँ लेजर फुटबॉल लीग के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है एक बड़े रिनोन कोच जो कि कोचिंग करते हैं और पाकिस्तान भी आए हुए, केविन माइकल रीव्स, और उनके साथ पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के अब कोचिंग में आ चुके हैं गौहर जमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन दोनों से हम बात करें। गौहर, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। अब आपने जिस तरह मुझे बताया कि 5 लड़के तो चैंपियन टीम से सेलेक्ट हुए, 5 लड़के आपने ओपन ट्रायल से सिलेक्ट किए, 5 लड़के जो ले रहे हैं पाकिस्तान, उनका क्या क्राइटेरिया है? उनका क्राइटेरिया ये कि एक लड़का हमने लिया सादुल्ला डिक्लेयर हुआ पिछले प्रीवियस चैलेंज कप में, नेशनल टीम से भी खेल रहे, बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ, जो पूरा नेशनल चैंपियनशिप में से चैलेंज कप में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ। एक हमने लिए वहीद लड़का, 17 ईयर उसकी एज है, कराची का लड़का है, और वो ही वाज टॉप गोल स्कोरर इन दैट चैलेंज कप। उसके लिए क्राइटेरिया आपने चैलेंज कप से लिया है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे तो अभी पाबंदी है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, किसने आपको सजेस्ट किया कि इन प्लेयर्स को आप रखें? हमने असल में वही की, क्योंकि जाहिर बात है ये तो क्लब के लड़के थे, इनको केविन का तो कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। केविन डिडंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट टू यू, क्योंकि असल में केविन तो इतना फेमिलियर नहीं था पाकिस्तान की टीम से, जाहिर बात है वो तो फॉलो हम ही कर रहे थे। तो उसमें जो बेस्ट लड़के थे, लेट्स सपोज हमारा सादुल्ला लड़का था, प्रोफेशनल लीग बाहर खेला है, उसको बुलाया, वही टॉप गोल स्कोरर था, इमर्जिंग प्लेयर है, 17 ईयर उसकी एज है, टॉप गोल स्कोरर था, उसको बुलाया। हसन बशीर मोस्ट सीनियर लड़का था नेशनल टीम में और एक बड़ा अच्छा एज उसकी ज़्यादा है वो है, लेकिन आपको पता है कि कभी कभी आपको मिसबा चाहिए टीम में, तो वो जाहिर बात है कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। वो 30th नंबर से आपको आगे ऊपर ला सकता है। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में तो 30th नंबर पे थे आप लोग, लेकिन पिछले उसमें आप देख लें कि उसमें हमारी बिल्कुल रॉ मटेरियल, मतलब कि पहली दफ़ा इंटरनेशनल किया हमने, इस दफ़ा ये किया कि जो जिनका ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो दीगर टीमें भी तो लेकर आ रही हैं, दीगर टीमें भी लेकर एवरीवन इज अलाउड टू एक्चुअली टेक 5 प्लेयर्स फ्रॉम देयर नेशनल टीम। बिल्कुल, तो इस दफ़ा जो अगर प्रीवियस टीम के साथ अगर हम कंपेयर करें और इस टीम को, तो डेफिनेटली ये टीम उससे फार बेटर है। What is your opinion regarding that? Because they have selected 5 players from the champion team. They have selected 5 players from the trial which you took yourself, and they have selected 5 players from the national team, from the top footballers of the country. Do you agree with this sort of combination? Yeah, I don't see why not, because what you have is you have a good blend of experience, a good blend of youth. You know, there's some what you call raw talent, and in raw talent you can have some really good footballers. So I don't see a problem with that. The only issue I would say, the older you are, then I think the more difficult it becomes, because he was talking about Hassan Bashir. He said he's quite old. He's like Misbah-ul-Haq of Pakistan cricket team. So don't you think that in his place a youngster could have been better? It could, but you could look at it from both sides of the coin. You could have it from the experience that he has in football. You know, where he can read certain situations in the field, whereas a youngster a little bit naive and he'll take a chance where possibly he shouldn't. So you know, you can look at it from both sides really. But I don't see any issues with that really. One thing which I want to know from you, sponsorship is the main thing. Transpala Group is providing all the facilities. They were the one who started in 2007. Nobody had ever thought about it, bringing the leisure league to Pakistan. Don't you think the role of Transpala's group for promoting this leisure league in Pakistan, it's very important, and it's quite good from youngsters and from amateur footballers' point of view? It is, and as we said earlier, they've done a fantastic job in doing what they've done, you know, providing facilities for these kids to go and enjoy their football.
But you know, I think there needs an awful lot more people to, you know, sponsor and put a little bit of finance into football. You know, I don't want to get into too many politics because that's not my game. But it does need people to invest in these guys, because you know what? I was talking to somebody earlier and they were saying that the national team has never played a team outside of Europe, sorry, outside of Pakistan. There was some internal problems, you know, with Pakistan Football Federation. Now they have formed a normalization committee. Yeah. You want to say something? मेरा भाई असल में ये है ना कि जो ट्रंक वाला फैमिली ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, आई थिंक कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एज वेल। आप खुद सोच लो, अगर चतराल का लड़का लाहौर कभी नहीं आएगा आपको ट्रायल देने के लिए, चतराल में लीग कराकर जो उनका टैलेंट है उसको बाहर, और जितनी एक्टिविटीज़ होंगी आपको प्लेयर मिलेंगे। पीपीएल आप लोगों ने कराया, फखर जमान मिला आपको, कितने यंगस्टर मिले। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी जब फुटबॉल फेडरेशन के मामलात ही ठीक नहीं होंगे? फुटबॉल फेडरेशन के नॉर्मल हो गए, नॉर्मलाइजेशन कमेटी लग गई है, अभी तो कोई प्रॉपर फेडरेशन तो नहीं है ना। देयर इज अ कमेटी हु इज रनिंग द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। असल में ये तो जाहिर बात है कि फीफा ने अगर वो बैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू सपोर्ट एज वेल, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट्स नॉर्मल, आई थिंक ये होता रहता है फेडरेशंस में, आपने देखा। For me, it just depends how important football is to the people and the powers that be. You know, it depends how important football is to them. I know cricket is the favourite sport. You know, but in Pakistan, people are crazy about football. Yes, I know. Yeah. Whenever the World Cup of football is held, the actually streets are, you know, without the people, and they are all watching on television. Exactly. But you know, we can watch it, but it's taking part, and it's getting the national team involved in playing, you know, teams from Europe, you know, Eastern Bloc teams, you know, the UK and various other parts of the world, because that's how you're going to learn, you know, to progress with the national team. You know, I know you do well in the Asian, you know, fraternity, but you know, if you want to progress. But outside Asia, their performance is quite pathetic, you know. Yeah, but the reason is because they don't. Their ranking is above 200, you know, Pakistan's football ranking, because they didn't play any sort of tournament for the last 2 or 3 years, 4 years. So their ranking is above 200. Yeah. 204. Exactly. I know. This is why I'm saying that there needs to be investment. Okay. You know, from the kids downwards to, you know, to the professional level. It needs investment, absolutely. हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। केविन माइकल रीव्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब गौहर जमान की जगह आखिरी चंक में हमें लेजर लीग के एक फुटबॉलर हैं अनस इरफान, वो ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।